गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये आपका इकोनॉमी सेक्शन का जो रादर इंफ्रास्ट्रक्चर सब टॉपिक है उसके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पार्लियामेंट को बताया है कि 1500 से ऊपर के जो सेंट्रल सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंट्री में चल रहे हैं उसमें से 721 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिलेड हैं। अब टॉप 3 सेक्टर्स जिनमें डिले देखने को मिल रहा है, जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डिले देखने को मिल रहा है, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है। तो रेलवेज़ के अलावा पावर सेक्टर, कोल सेक्टर और एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले देखने को मिल रहा है उनमें। ठीक है, अब क्या रीज़न है, क्यों डिले हो रहा है, तो ये भी मेंशन किए गए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ रही है, लैंड एक्विजिशन करने में डिले हो रहा है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही है जल्दी, फिर फंडिंग कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के इश्यूज़ हैं, फिर लोकल बॉडी और म्यूनिसिपल परमिशंस भी नहीं मिलती हैं कई बार, और कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज़ या फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग इश्यूज़ भी आते हैं। ठीक है, अब इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे डेटा प्रेजेंट किया गया इनको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को कैसे पता लगता है ये। तो एक्चुअली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग जो है वो बनाए गए हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट आर्म है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं उन खास करके उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो 150 करोड़ रुपए से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन जो है वो पीरियोडिक रिपोर्ट्स देता रहता है मिनिस्ट्रीज़ को और प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ को कि कैसे जो है इन प्रोजेक्ट्स को आप टाइमली इंप्लीमेंट कर सकते हो। इवन कैबिनेट कमेटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी असिस्ट करने का काम करता है। तो 2 फेजेज़ में जो है ये जो आपकी प्रोजेक्ट की एनालिसिस किया जा रहा है। पहले फेज़ के अंदर तो जो ये आपका IPMD है जो है, उन्होंने सारे के सारे जो ये 150 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स थे उनको इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जो है वो ऑनलाइन जो है बनाया, ताकि उनके ऊपर ठीक से एक तरह से डैशबोर्ड के थ्रू जो है उनके ऊपर एक तरह से मॉनिटरिंग की जा सके। फिर सेकंड फेज़ है जिसके अंदर मॉनिटरिंग की जाती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोग्राम और प्रोजेक्ट प्लानिंग की मॉनिटरिंग की जाती है, और जो है प्रोजेक्ट्स को जो है वो मॉनिटर किया जाता है, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हों, है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं, डायलॉग ओवर एयर स्पेस वायलेशंस। तो ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया और चाइना ने अभी रिसेंटली डिस्कशन किया है कि अभी इंडिया ने और नॉट इंडिया बट चाइना ने जो है LAC पर एयर स्पेस वायलेशन किया है। तो एक्चुअली क्या है कि एयर स्पेस वायलेशन ऐसा नहीं हुआ कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट इंडिया की एयर स्पेस में आ गए, बट वो बहुत ही पास LAC के अपने जो है वो अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उन्होंने जो है वो फ्लाई किया था। तो इंडिया ने इस चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया और उन्होंने बोला कि हमारे जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं चाइना के साथ, उसकी एक तरह से वायलेशन है। पिछले 2 साल में चाइना ने अपने जितने भी मेजर एयर बेसिस हैं जो इंडिया के सामने हैं, होतान, काशगर, करगुनसा और शिगात्से जो उनके तिब्बत में आते हैं, वहाँ पर उन्होंने उनको अपग्रेड कर लिया है। इसीलिए इंडिया भी जो है वो अपने हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर चल रहा है। तो एयर स्पेस क्या होता है? एयर स्पेस वायलेशन तो हमने सुन लिया, बट एयर स्पेस होता क्या है? तो एयर स्पेस ऐसी स्पेस है हमारी एक नेशनल टेरिटरी के ऊपर की जो हमारी गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। ऑफ कोर्स आउटर स्पेस इसके अंदर नहीं आता। ये नहीं होता कि आपके जो टेरिटरी से ऊपर जितना भी एरिया है एयर का वो सारा ही आपका है। ठीक है, एक ऐसी जो आउटर स्पेस है वो आपकी टेरिटरी में नहीं आती है। लेकिन ये जो एयर स्पेस के लिए ट्रीटी है जो आपकी शिकागो कन्वेंशन की जो है, उसमें ये नहीं डिफाइन किया गया कि एयर स्पेस एक कंट्री की कहाँ पर ख़त्म होती है और आउटर स्पेस कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, सो शिकागो कन्वेंशन और ICAO देखते हैं हम, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई शिकागो कन्वेंशन द्वारा 1944 में, और इसमें कोर प्रिंसिपल्स बनाए गए कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बाय एयर कैसे चलाया जाएगा। अब सबकी अगर अलग अलग एयर जो है आपकी एयर स्पेस है, अब फिर अगर सबकी अपनी अपनी टेरिटरी है तो इंटरनेशनल ट्रैवल कैसे होगा? उसके लिए उन्हें बताया गया कि ये ICAO बनाया गया जो कि UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। फिर वो उसने बताया कि कैसे ग्लोबल एयर नेविगेशन पीसफुल मैनर में चलेगा। इंडिया भी इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, और मॉन्ट्रियल जो है जो कनाडा में पड़ता है वहाँ पर ICAO का हेडक्वार्टर्स है। तो अब इसमें एयर स्पेस की सोवरेनिटी जो है, इसमें कहा जाता है कि हर स्टेट जिनकी वो एयर स्पेस है उनके पास कंप्लीट और एक्सक्लूसिव सोवरेनिटी है अपनी टेरिटरी के ऊपर की एयर स्पेस की। ऑफ कोर्स इसमें कोई भी इस कन्वेंशन में ये नहीं बताया गया कि नेशनल एयर स्पेस और इंटरनेशनल एयर स्पेस क्या होते हैं। फिर बिना किसी एग्रीमेंट के
एयरलाइंस जो हैं उनको किसी भी फॉरेन टेरिटरी में जो है एंटर होने की इजाज़त नहीं होती है। कोई भी इनकमिंग एयरक्राफ्ट अगर इंडिया में आ रहा है तो उसको पहले प्रायर क्लियरेंस लेनी पड़ती है। इंडिया की जो एयर स्पेस है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो है काम है वो सोल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इंडियन एयरफोर्स की है। अब हम देखते हैं कि कौन से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जिसको इंडिया ने बोला है कि वो चाइना ने वायलेट किए हैं। तो बिटवीन 1993 और 2012 बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं इंडिया और चाइना ने साइन किए। इनके अंदर जैसे कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कहा गया है कि कोई भी साइड जो है वो एक दूसरे के खिलाफ फोर्स नहीं यूज़ करेगी, सेल्फ रिस्ट्रेंट हम एक्सरसाइज करेंगे, कोई लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जो है LAC के बिल्कुल साथ में हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं करेंगे, कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है वो LAC के पास जो है वो नहीं फ्लाई किया जाएगा। ये वाली जो आपका कंडीशन है जिसको चाइना ने भी रिसेंटली वायलेट किया। इवन गलवान वैली के टाइम पर भी उन्होंने जो है ये फोर्स का यूज़ किया था, तो उसको भी उन्होंने उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को भी उन्होंने वायलेट किया था। फिर एक और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जिसके अंदर कहा गया है कि हम फायर नहीं ओपन करेंगे, बायोडिग्रेडेशन, हजार्डस केमिकल्स, ब्लास्ट ऑपरेशंस, ये सब हम नहीं करेंगे विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ LAC। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्काई लाइट एक्सरसाइज। तो ये आपका सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक है और इंडियन आर्मी ने ये एक मेजर पैन इंडिया एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम है स्काई लाइट। इसके अंदर इंडियन आर्मी ने अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को चेक करने के लिए, अपने हाई टेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को चेक करने के लिए ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। तो ये पहली ऐसी लार्ज स्केल एक्सरसाइज है जिसके अंदर अपनी स्पेस डोमेन कैपेबिलिटीज़ को इंडियन आर्मी ने चेक किया है। अब इसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन असेट्स और इवन जो अपने इंडियन आर्मी के पर्सोनल को भी ट्रेनिंग दी गई है। एक पैन इंडिया लेवल की एक्सरसाइज थी ये, जिसके अंदर सारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन असेट्स जो है इंडियन आर्मी ने अपने एक्टिवेट कर दिए थे ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए। और क्यों की गई है एक्सरसाइज, ये रैशनले क्या है? तो इंडियन आर्मी अपने स्पेस असेट्स की जो है रेजिलियंस दिखाना चाहती थी, देखना भी चाहती थी रादर, और स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशंस आने वाले टाइम में जो आने वाली वॉर्स में बहुत डिसेसिव साबित होंगे। कॉम्प्लेक्स एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करना शुरू कर चुकी है। इवन खासकर जो कम्युनिकेशन जो होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, और इंडिया को इसके अंदर टेक्निकल कॉम्पिटेंस बनाने की ज़रूरत है। चाइना जो है वो बहुत आगे निकल चुका है इन्फॉर्मेटाइज्ड और इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर में, खासकर स्पेस, साइबर स्पेस, रोबोटिक्स, लीदल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम जिनको अब लॉज कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब वॉरफेयर में चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया है। इसीलिए इंडियन आर्मी भी जो है C4I2SR सिस्टम्स को अपने अपग्रेड कर रही है। ये C4I2SR क्या होता है? कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। ये कैपेबिलिटीज़ इंडियन आर्मी अपनी बढ़ाने में लगी है। अब स्पेस कम्युनिकेशन इंडियन आर्मी के देखते हैं, तो अभी तक तो हमारी जो इंडियन आर्मी की स्पेस कम्युनिकेशन है वो इसरो अपने सैटेलाइट्स के थ्रू उनको प्रोवाइड करता है। अभी तक जो है इंडियन आर्मी के पास अपनी खुद की एक डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है, लेकिन एयरफोर्स के पास और नेवी के पास उनकी अपनी खुद की एक सैटेलाइट है। ठीक है। लेकिन ये भी ट्रेंड चेंज होने वाला है क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने GSAT-7B को अप्रूवल दे दिया है, जो मार्च 2022 में, अभी 3-4 महीने पहले ही अप्रूवल मिला है। हमने डिस्कस भी किया था ऑफ कोर्स इसको, और ये सैटेलाइट इंडियन आर्मी को बाय दिसंबर 2025 मिल जाएगी। इंडिजिनस सैटेलाइट है, टेक्निकल कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट्स और जो है बाकी की जो है आपकी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए इंडियन आर्मी की ये सैटेलाइट उनको हेल्प करेगी। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे। आर्ट एंड कल्चर का या हिस्ट्री का आपका टॉपिक है। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को हम आर्ट एंड कल्चर में ही डाल देते हैं क्योंकि वो ब्रॉडली उसको ही कैप्चर कर लेता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को बोला है कि 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेंबरेंस डे बनाया जाएगा। लास्ट ईयर डिक्लेयर किया गया था और इस बार उन्होंने कहा है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ में मनाना है। तो इसमें जो सफरिंग्स ऑफ पीपल जिन्होंने पार्टीशन देखा था उन सबको हम कमेमोरेट करेंगे। अब ये सफरिंग जो है हमारी कहाँ से आ रही है? पार्टीशन से। तो पार्टीशन के लिए हम देखते हैं पहले तो 2 नेशन थ्योरी। तो ये थ्योरी कहती है, सर सैयद अहमद खान ने सबसे पहली बार ये थ्योरी दी थी कि इंडिया कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, इंडिया कोई कंट्री नहीं है, इंडिया एक कॉन्टिनेंट है। इसमें हिंदूज़ और मुस्लिम्स 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं और ये दोनों अलग अलग नेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये दोनों एक नेशन में नहीं रह सकते हैं। तो जैसे कि उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी हुई, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, हिंदू रिवाइवलिज्म हुआ, तो उससे हिंदूज़ और मुस्लिम्स फर्दर डिवाइड हो गए।
लेकिन बीच में ऐसे भी कुछ जो है टाइम आया जब हिंदूज मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिली। बट मोटे तौर पर जो है सर सैयद अहमद खान ने एक ऐसा ट्रेंड शुरू कर दिया कि हिंदूज और मुस्लिम जो है वो एक कंट्री में नहीं रह सकते। लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया इस थ्योरी के अगेंस्ट है, इस थ्योरी के लिए एक जीता जागता थप्पड़ है इस थ्योरी को, क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इंडिया की कंट्रीब्यूशन में उनका इक्वल जो है वो पार्ट है, और इंडिया में वो बिल्कुल थ्राइव कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इवन द मुस्लिम जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये टू नेशन थ्योरी का सबसे बड़ा जो एक तरह से थप्पड़ है वो इंडिया की खुद की एग्जिस्टेंस है। इसीलिए यही थ्योरी की जो है एक्सेप्शन समझ लो इंडिया है, तो यही पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं होता है। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा इंडिया को जो है वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि जिस बेसिस पर, जिस प्रिमाइस पर जो है पाकिस्तान बना था टू नेशन थ्योरी पर, इंडिया की एग्जिस्टेंस उसी थ्योरी को ही जो है वो वायलेट करती है। तो उनकी जो प्रेमाइज है उसी को ही हमने जो है वो उसकी ही धज्जियाँ उड़ाते ही हमारी इंडिया की एग्जिस्टेंस, तो इसीलिए वो ऑफ कोर्स इंडिया के अगेंस्ट रहते हैं। तो अब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ कैसे? तो ऑफ कोर्स बहुत सारी रीजंस की वजह से इंडिया का पार्टीशन हुआ। तो ये आपको आंसर में भी आ सकता है कि कैसे पार्टीशन हुआ था। तो आपको लिखना पड़ सकता है, पहला तो सबसे बड़ा ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दूसरा बंगाल पार्टीशन जो 1905 में हुआ, उसमें एक ऐसे प्रोविंस को जो कि सेकुलर प्रोविंस था उसको हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। फिर मुस्लिम लीग बनाई गई, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिम्स को लखनऊ पैक्ट द्वारा। 1937 के इलेक्शंस में कांग्रेस ने जो है लीग को एज कोलिशन पार्टनर्स जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जिन्ना ने लाहौर सेशन में कहा 1940 में कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो कभी भी कॉमन नेशनैलिटी उनकी नहीं हो सकती। फिर जो है ब्रिटेन ने अगस्त ऑफर में प्रो लीग एटीट्यूड दिखाया। क्रिप्स मिशन का फेल होना, शिमला कॉन्फ्रेंस का फेल होना, कैबिनेट मिशन जो है उसका फेल होना, इन सब से जो है कल्मिनेट फाइनली क्या हुआ कि जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे बुलाकर जो है वो पाकिस्तान की डिमांड कर दी, और माउंट बैटन प्लान जो है वो फाइनली इंडिया को पार्टीशन करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल हैंडलूम डे। तो ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड टॉपिक है और इकोनॉमी सेक्शन से भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट मोस्टली आप आर्ट एंड कल्चर में इसको कंसिडर कर सकते हो। तो रिसेंटली 8th नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया कल 7th ऑफ अगस्त को। अब इसमें स्वदेशी मूवमेंट को हम कमेमोरेट करते हैं इस दिन के अंदर, और अवेयरनेस जनरेट करते हैं अबाउट हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री। तो पहली बार ये नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त 2015 में पीएम मोदी ने चेन्नई में मनाया था। हैंडलूम कम्युनिटी को जो है हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी को जो है वो ऑनर किया गया था इस दिन, और उनकी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए को हाईलाइट किया गया था। तो अब हम ये क्यों मनाते हैं? स्वदेशी मूवमेंट के लिए मनाते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि उस दिन स्वदेशी मूवमेंट जो है शुरू की गई थी 7 अगस्त 1905 को। तो स्वदेशी मूवमेंट क्या थी वो भी देख लेते हैं। तो जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो जो है स्वदेशी मूवमेंट का जो है वो उठाया गया, और कैलकाटा टाउन हॉल में फॉर्मली अनाउंस किया गया कि इंडिया से स्वदेशी मूवमेंट जो है वो बनाएगा, और बॉयकॉट रेजोल्यूशन को भी उसी कैलकाटा टाउन हॉल मीटिंग में पास किया गया। तो कांग्रेस सेशन 1905 का जो बनारस में हुआ था, तब वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी स्वदेशी की कॉल दी, और कांग्रेस सेशन 1906 का जो कैलकाटा में हुआ था अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी, उसमें स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड्स जो है वो पास की गई। अब जो है स्वदेशी और बॉयकॉट ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो हम इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की को यूज़ करने की बात करते हैं, और जब हम बॉयकॉट की बात करते हैं तो हम फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करने की बात करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो ये आपका गवर्नेंस सेक्शन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने बताया कि पिछले 3 साल में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने लगभग 91% केसेस को जो है वो डिस्पोज कर दिया है। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है क्या? तो इसको आर्टिकल 323A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, और ये आपके यूनियन के अफेयर्स में और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो अथॉरिटीज़ आती हैं उनको उनके जो है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाया गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 में पास किया गया, जिसके अंदर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। तो इसके अंदर जो चेयरमैन होते हैं वो एक सिटिंग या फिर एक रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को हेड करते हैं।
इसकी ज्यूरिसडिक्शन उतनी होती है जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट के अंदर मेंशन की गई है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंडर ये काम करता है। और जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं इसके, उनकी जो सर्विस कंडीशंस होती हैं वो सेम एज जज ऑफ अ हाई कोर्ट होती हैं। और ऑर्डर्स पास किए जाते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा, उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जो भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट उस जुरिस्डिक्शन में पड़ता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022। तो ये आपका इकोनॉमी सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, रादर एनवायरनमेंट सेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट बिल जो है आपका, अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को ये अमेंड कर रहा है, जिसके अंदर जो कि आपके और सबके एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन के लिए लाया गया था। अब इसके अंदर एनर्जी कंजम्पशन को रेगुलेट करने की बात की गई है, इक्विपमेंट से, अप्लायंसेस से, बिल्डिंग से, इंडस्ट्रीज से, कि कैसे हम जो है कम से कम एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसके प्रोविजंस क्या हैं? तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो कंजम्पशन स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर सकती है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी जो है पावर दी गई है कि वो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम चला सकते हैं। हमने अभी बस सैटरडे को इसके बारे में डिस्कस किया था, कार्बन मार्केट के बारे में, कार्बन क्रेडिट के बारे में। तो ये कार्बन ट्रेडिंग जो है कार्बन मार्केट में ही होगी। फिर एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग्स, तो ये भी जो है बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट रादर जो है एनर्जी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड जो है लेके आ सकती है फॉर ऑफ कोर्स ऑफिस या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ऑल्सो। जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनके लिए अगर थ्रेशहोल्ड को थोड़ा कम करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। ठीक है। फिर एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड जो है वो आपके इक्विपमेंट अप्लायंसेस के लिए लाए जा सकते हैं, इवन व्हीकल के लिए भी लाए जा सकते हैं, और वेसल्स के लिए भी लाए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग शिप्स एंड बोट्स। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बढ़े चलो मूवमेंट। तो ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो एक यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव लेके आई है, बढ़े चलो मूवमेंट, जो कि हमारे अमृत महोत्सव का जो है वो पार्ट है। इसके अंदर यूथ ऑफ द कंट्री को एनकरेज किया जा रहा है कि वो आगे आकर डेमोक्रेसी की स्पिरिट को इम्बाइब करें। जब हम 75th ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक तरह से जन भागीदारी का इनिशिएटिव है। हर रोज़ 10 सिटीज़ में 5 अगस्त से 11 अगस्त तक ये जो है फ्लैश डांसेस और ये सेलिब्रेशंस की जाएंगी। और फाइनल जो ग्रैंड फिनाले होगा इसका, वो 12 अगस्त को ताल कटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में इस मूवमेंट का ग्रैंड फिनाले किया जाएगा। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is delay in infrastructure projects. So the Ministry of Statistics and Program Implementation has informed the Parliament that out of the 1,568 central sector infrastructure projects which are being carried out by the government, 46% of these projects are being delayed. So this topic is important for your economy section, rather more specifically your infrastructure section. So the top three sectors which are witnessing delays are Ministry of Petroleum, Ministry of Railways, and the projects which are being spearheaded by Ministry of Road Transport and Highways. So apart from railways, power, coal and atomic energy project are the top 20 delayed projects, and it also includes a multi-state petroleum project. Okay, so what are the reasons which have been attributed by the ministry for the delay in such projects? So it is, the ministry has said that there are law and order problems, there are sometimes land acquisition problems, there is sometimes environmental and forest clearance delays, funding constraints, rehabilitation and resettlement issues of course local people, local body or municipal permissions, and even contractual issues and utility shifting issues. So what is the background of this topic? So actually, how the Ministry of Statistics and Program Implementation is presenting this data, because Infrastructure and Project Monitoring Division and Program Implementation Wing have been accommodated in this MOSPI, and it is providing management services to the government to keep a track over the infrastructure projects which cost above 150 crore rupees threshold. So Project Monitoring Division is laying out periodic reports, and it is also assisting the ministries involved in these projects so that they can timely implement these projects and programs. A control mechanism has also been established, which is also assisting the Cabinet Committee on Infrastructure so that they can review and make decisions regarding these projects. So how this project monitoring is being done? Of course, it involves two phases. Under the first phase of the project,
The projects are being computerized using internet technology, and online transfer of information is being facilitated. And in the second phase of the project, the actual review of the systems of monitoring program or project planning commences. So implementation and performance management of infrastructure projects which are involved, which are being spearheaded by the public and private sector, are being monitored, and periodic reports are being submitted to the relevant ministries and even to the cabinet committee on infrastructure. So the next topic is dialogue over airspace violations. So this topic is important for your security and international relations also. So India and China have recently conducted a meeting, and they've discussed ways to better establish understanding to manage airspace and avoid airspace violations. So you know that recently the Chinese side violated the confidence building measures which were discussed between India and China, and it violated the airspace violation. It spearheaded the airspace violation, which is in direct breach of the confidence building measures which have been agreed between India and China. So India has also objected to it, and in the last 2 years China has also upgraded all its major forces, or all its major air bases which are facing India, and these are the Hotan, Kashgar, Gargunsa, and Shigatse air base. And that's why even Indian side is also on a high operational alert, fearing any misadventure by the Chinese side. So, what is airspace? So, airspace means any space above a particular national territory, and it is treated as belonging to the government of who controls that territory. It does not include airspace because it is being ruled, or it is being administered by the Outer Space Treaty, which was signed in 1967. But the thing is that this Chicago Convention, this convention does not define the altitude and the where this outer space begins and airspace ends. Even the Outer Space Treaty does not define where this outer space actually begins. So there is a confusion in this case. So anyways, so what is this Chicago Convention and what is ICAO? So ICAO means International Civil Aviation Organization. It was established by the Chicago Convention, which is a UN which has created this UN specialized agency, and it establishes the core principles which governs the international transport by air. India is one of the founder members of ICAO, and it is headquartered in Montreal, that is in Canada. So what is airspace sovereignty? So this convention says that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory, but it does not define the terms national airspace and even international airspace. So, without an explicit agreement, no passenger services or airlines services can provide services or can fly over a foreign territory. So it means that any incoming aircraft which wants to enter the Indian airspace has to has to obtain prior clearance from the Indian side, and the defense of Indian airspace is the sole uh, responsibility of Indian Air Force. So, what are these confidence building measures that we are talking about, which China has recently violated? So, these confidence building measures were set forth by India and China during the several meetings were held between 1993 to 2012. So some of them include that neither side shall use force or threaten to use force against each other. Both sides shall treat each other with courtesy. Both sides shall exercise self-restraint in case of any face-to-face situation near the LAC, and both sides shall avoid holding large military exercise near the proximity of the LAC, and no military aircraft shall fly across the LAC. So this one has been violated by China. None of the sides, either India or China, shall open fire, cause biodegradation, or use hazardous chemicals, or even conduct blast operations within 2 kilometers from the LAC. So these are certain agreements, or basically confidence building measures, which have been signed between India and China. And China has routinely started violating these confidence building measures, especially since 2013, since rather the President Xi Jinping has assumed the presidentship. So the next topic is skylight exercise. So this topic is important for your
security section, because Indian Army has recently conducted this pan-India exercise. It is codenamed Skylight, and it was aimed to test the operational readiness and the robustness of Indian Army's high-tech satellite communication systems. So this is one of its kind, first of its kind large exercise which has been conducted by the Indian Army to boost its space domain capabilities. It has tested its operational readiness of satellite communication assets, and it has also involved training of its personnel who man these assets. It was a pan-India exercise, and all satellite communication assets of the Indian Army were activated during this exercise. And the rationale behind this exercise is to validate and showcase the resilience of Indian Army's communication systems. And it is important because the space-based communication systems will prove to be decisive in any future military conflict. India wants to leverage the complex aerospace technologies and build its technical competence in this field, because especially in the northern borders, because China has long-standing thrust on informatized and intelligentized warfare capabilities, and it has moved leagues ahead of us in space, cyberspace, robotics, laws, artificial intelligence warfare capabilities. So India is also focusing upon quantum computing and communication systems, also on C4I2SR. What is C4I2SR? So it means command, control, communication, computers, intelligence, information, surveillance, and reconnaissance. So all these capabilities, development of all these capability means C4I2SR. So what are the how the space communication by Indian Army is being conducted till now? So actually ISRO provides a number of satellites to Indian Army for the use for communication purposes, but Indian Army currently does not have a dedicated satellite of its own, unlike the Indian Air Force and Navy, who both of them having their own satellites and for their communication networks. But this trend is also being changed now, because Defense Acquisition Council, like we have talked about it in our current affairs in March, that Indian Army is also going to get its own satellite, GSAT 7B, and it will be an indigenous multi-band satellite which will support the tactical communication requirements of the Indian Army. So the next topic is Partition Horrors Remembrance Day. So University Grants Commission has asked all universities and colleges. So this topic is important for your art and culture section. So the UGC has asked all universities and colleges to start observing August 14th as Partition Horrors Remembrance Day. So basically this was announced last year on 14th of August, that we want to commemorate the sufferings and sacrifices of millions of Indians during the partition in 1947. So how did the partition of India happen? So actually we can trace the roots of partition to the two nation theory, which was propounded by Sir Syed Ahmad Khan, who was the first exponent of this theory, which said that India is not a nation, it is a continent, and it is not a country, and Hindus and Muslims are two major components of this continent. Several incidents like partition of Bengal, Urdu-Hindu controversy, Hindu revivalism, all these contributed to driving a further wedge between these two communities, despite the fact that there were several incidents when these two communities came together to fight against the British also, like the Lucknow Pact, non-cooperation movement, Khilafat movement. So these were, even the annulment of partition of Bengal was also the time when Hindus and Muslims came together against the British government. But then what led to the partition of India? So of course the primary responsibility of it lies towards the British policy of divide and rule. Then Bengal partition happened. Muslim League was formed. Separate electorate for Muslims was given through Lucknow Pact. During the 1937 elections, the Congress did not allow League to become their coalition partners, and even Jinnah in 1940 Lahore session announced that Hindu and Muslims can never have a common nationality. There was also pro-League attitude by the British in the August offer, Cripps mission, Shimla conference, and even cabinet mission. But the final nail was the Jinnah's brutal direct action day, which led to exceptional violence
which finally culminated with the Mountbatten Plan of 1947. So the existence of India is itself a defeat of two nation theory, because India is a vibrant democracy, a vibrant and pluralistic democracy, where our Muslim brothers share as much rights and powers as any other community. So this is what disturbs Pakistan, because the premise or the foundation of Pakistan rests on this two nation theory. So it cannot digest that in the Indian subcontinent there can be a vibrant and an economically prosperous country like India, which is defeating the purpose of two nation theory every day since 1947. So the next topic is National Handloom Day 2022. So 8th National Handloom Day, of course, was celebrated yesterday. It is also a topic for your art and culture section. So why National Handloom Day is being celebrated on 7th of August only? Because on this very day we want to we the Indians the Indians declared Swadeshi movement in the year 1905. So we want to generate awareness about handloom industry. So the first National Handloom Day was celebrated on 7th of August in 2015 by PM Modi in Chennai. And on this day, handloom weaving community is honored rather, and the contribution of this sector in our India's socio-economic development is highlighted. So what was the Swadeshi movement? So it was a response to the partition of Bengal, which was a decision taken by Lord Curzon, and it wanted to divide Bengal between a minority and a majority groupings. And this formal proclamation of Swadeshi movement was made on 7th of August in 1905 at the Calcutta town hall meeting, which also passed this boycott resolution also. So in the Congress session of 1905, which was held in Benares, even Gopal Krishna Gokhale ji took up the Swadeshi call. And then in 1906 the Congress session took place in Calcutta under the presidentship of Dadabhai Naoroji ji, and it also took up 4 resolutions on Swadeshi, boycott, national education, and even self-government. So you know that Swadeshi and boycott are complementary. We mean by Swadeshi we mean adoption of indigenous products, and by the term boycott we mean rejection of foreign made products. So basically, until you once you start adopting indigenous products, you are automatically boycotting the foreign made products. So these are basically complementary in nature. So the next topic is Central Administrative Tribunal. So this topic is important for a governance section. So Union Minister of State for Personal and Public Grievances has informed the Parliament that in the last 3 years, Central Administrative Tribunal has achieved a disposal rate of about 91%. So you know that Central Administrative Tribunal was established under Article 323 of the Constitution, and it works for the adjudication of disputes in connection with the affairs of the union or even authorities which are under the control of the government. So Administrative Tribunals Act was passed in 1985, which has established this one central administrative tribunal and the state administrative tribunals. So a chairman who heads the SCAT is a sitting or a retired judge of a high court, and the jurisdiction of CAT is defined in the Administrative Tribunals Act of 1985. It is guided by the principles of natural justice, just like the NGT, that is the National Green Tribunal, and the conditions of service of chairman and members of the tribunal are similar to a judge of a high court as per the Administrative Tribunals Amendment Act of 2006. Orders of Central Administrative Tribunal can be challenged before the respective high court in which the tribunal or the bench of the tribunal is situated. So the next topic is Energy Conservation Amendment Bill of 2022. So this topic is important for your environment section. So we already discussed about it, I think, yesterday, and we saw that Energy Conservation Bill is being introduced into the Lok Sabha, and it aims to amend the Energy Conservation Act of 2001, which aims to promote energy efficiency and conservation. It also provides for the regulation of energy consumption by equipment, appliances, buildings, and industries. And this new amendment bill provides for empowerment of central government to specify energy consumption standards. It also empowers the central government to specify a carbon credit trading scheme based upon which that carbon market, which we discussed last time, will be established.
and it also provides for an energy conservation and sustainable building code, which will provide norms for energy efficiency and conservation, and the requirements for green buildings also. It will be applicable to office and residential buildings, and even the state governments will be empowered to lower the load thresholds in certain cases. And uh, certain energy conservation standards for vehicles and vessels will be also be specified under this act, for which the bill has made certain provisions. Okay, so the next topic is Badhe Chalo movement. So this topic is also important for our art and culture section. So Ministry of Culture has created a youth-centric activation of Amrit Mahotsav by naming this initiative as Badhe Chalo movement. It will involve the youth of the country, and it will encourage them to come forward and imbibe the true spirit of our democracy, so that we can celebrate 75th year of India's independence. It will be based upon Jan Bhagidari, and this movement will be held across 10 cities every day from 5th of August to 11th of August, and it will culminate into a grand finale on 12th of August at Talkatora Stadium in New Delhi. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.